की दर से बढ़कर 174 करोड़ रुपीज रहा, जो पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ रुपीज था। 31 दिसंबर 22 तक हमारी ऑर्डर बुक वैल्यू करीब 14,000 रुपीज है, जिसमें 700 करोड़ रुपीज के एक प्रोजेक्ट की अपॉइंटेड डेट आना अभी बाकी है। ऑर्डर बुक में करीब 90% शेयर रोड्स एंड हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का है। क्वार्टर थर्ड में FY23 का कंपनी ने सभी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल क्लोजर अचीव कर लिया है और टिल डेट कंपनी के पास में 9 ऑपरेशनल और 14 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। FY23 में अभी तक कंपनी ने करीब 51,800 करोड़ रुपीज की बिड सबमिट की है, जिसमें 42,100 करोड़ रुपीज के हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 2,500 करोड़ रुपीज के रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं, 5,000 करोड़ रुपीज के रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, 2,200 करोड़ रुपीज के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं। बिट्स में करीब 14,100 रुपीज के प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। हमारे करंट ईयर का ऑर्डर इंटेक टारगेट अभी भी 15,000 करोड़ रुपीज बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि सफिशिएंट प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के चलते हम इसे अचीव कर लेंगे। हाल ही में कंपनी ने इंटीग्रेटेड ट्रस्ट के साथ में करीब 5,000 करोड़ रुपीज के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को जॉइंटली बिड करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की है। आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी द्वारा सेटल्ड भारत हाईवे इनविट ने अपने IPO के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ में फाइल कर दिया है। अब हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रेजेंट किए गए बजट के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली 23-24 के बजट का अनाउंस किया है। हर साल की तरह इस साल का बजट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस्ड है, जो भारत सरकार की देश की आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाना तथा देश में रोजगार के अवसर पैदा करना और देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया है, जो पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में 33% ज्यादा है और 23-24 में टोटल बजट का करीब 22% है। इसमें रोड और रेलवेज का शेयर करीब 4,98,000 करोड़ के साथ करीब 50% है। 2023-24 के लिए सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज के लिए 37% के इंक्रीज के साथ में 2,58,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया है, जो लास्ट ईयर 1,87,000 करोड़ रुपीज था। इसी तरह सरकार ने 2023-24 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए 75% इंक्रीज के साथ में 2,40,000 करोड़ रुपीज का कैपेक्स बजट का प्रोविजन किया है, जो लास्ट ईयर 22-23 में 1,37,000 करोड़ रुपीज था। सरकार देश के रेलवे नेटवर्क को विस्तार करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि देश भर में सामान के लोगों का आवागमन को सुधारा जा सके। इस बजट को लेकर हम काफी एक्साइटेड हैं तथा हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में कंपनी को अपने मार्जिन को बिना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए वापस 15 से 20% के ग्रोथ ट्रैक पर आ सकती है। हालांकि सेक्टर में कंपटीशन अभी भी एक बर्निंग इश्यू है। लास्ट में मैं श्री आनंद राठी को कंपनी के क्वार्टरली हाइलाइट्स के बारे में बताने के लिए कहूंगा। थैंक यू। So thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Let me present you highlights of the financial performance of the company for the quarter ended December 2022 in brief. I standalone basis revenue from operation for the quarter was approximately 1,899 crore with an increase of approximately 80 crores on year-on-year basis, and consolidated revenue from operation for the same period also increased by approximately 237 crore on a year-on-year basis to rupees 2,192 crores. Standalone EBITDA margin has increased to 14.58% in the quarter ended December 2022 from 14% approx in quarter ended December 2021. Our EBITDA margin at console level was around 27% in the quarter ended December 2022, higher from 18.72% recorded in the quarter ended December 2021. It was largely due to increase in the finance income recognized in the current period due to the revision in the bank rates. Our PAT margin at standalone level increased by 35% approx to 174 crore in the quarter ended December 2022 as compared to 129 crore in quarter ended
December 2021. And PAT margin at consolidated level was around 324 crores in quarter ended December 2022. Standalone net worth also crossed the mark of 5,000 crores. It was around 5,022 crores at the end of December 2022, and consolidated net worth was around 5,875 crores at the end of December 2022. Our total standalone borrowing outstanding at the end of December 2022 was around 847 crores with a debt to equity of around 0.17. And total consolidated borrowing outstanding at the end of December 2022 is around rupees 5,276 crore with debt to equity level of 0.91. During the 9 months, company has made addition to the fixed asset amounting rupees approximately 212 crores. And our net block of property, plant and equipments at the end of December 2022 is 1,532 crores approx. Investment in the subsidiary companies in form of both loans and equity was around 1,805 crores at the end of December 2022. Balance capital contribution which is required to be made for our under construction HAM/BOT project is rupees 1,580 crore, of which we are expecting contribution of around 200 crores in the current financial year. Our working capital days at the end of December 2022 is around 82 days as compared to 72 days at the end of fiscal 2022. This increase was largely because of increase in group debtors. Our trade receivables at the standalone basis are around 1,044 crores at the end of December 2022 as compared to 716 crore at the end of fiscal 2022. Our trade receivable at consolidated level are around 414 crores at the end of December 2022 as compared to 664 crores at the end of fiscal 2022. Our unbilled revenue at the standalone basis was around 894 crore at the end of December 2022 as compared to 581 crore at the end of fiscal 2022. Our unbilled revenue at the consolidated level is around 425 crore at the end of December 2022 as compared to 393 crores at the end of fiscal 2022. Our inventories were around 853 crores at the end of December 2022 as compared to 1,022 crores at the end of March 2022. Our cash and cash equivalents are at the external basis was around 396 crore at the end of December 2022 as compared to 445 crores at the end of fiscal 2022. Our cash and cash equivalents at the consolidated level is around 886 crore at the end of December 2022 as compared to 1,095 crore at the end of fiscal 2022. Our mobilization advance, which we are earning from our client, is outstanding at the end of December 2022 was around 291 crores as compared to 71 crore approx as at the end of fiscal 2022. That's all from my side. Essentially, thanks all the stakeholders, including employees, business partner, and the auditors for their continued support. On behalf of Infraprojects, I thank everybody who's attending this call. Thank you very much. Yeah, thank you, Parikshit. Over to you. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wants to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Alok Deora from Motilal Oswal. Please go ahead. Good afternoon, sir. Sir, congratulations on a decent pickup in execution. Sir, just wanted to understand on the order book side. So we have kind of not won, many projects since in this year. And also one project of Metro where L1 got cancelled. So while you mentioned about the bid pipeline being very strong, how many orders realistically we are looking at to achieve in the fourth quarter now? देखिए अभी जनरली हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे ना तो जो बिडिंग है वो लास्ट क्वार्टर में होती है
ऑल्दो कुछ मीटिंग्स ईयरली बेसिस पे चलती रहती है, लेकिन उसमें मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मतलब जो हैम के प्रोजेक्ट की जिनके पास में साइकिल को समझ में नहीं है वो लोग बिड कर पाते हैं। और अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करीब करीब हैम में आप देखेंगे मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट जो इस लास्ट क्वार्टर में होने हैं, और हमने अभी अच्छी बिडिंग भी कर रखी है। हमको पूरी अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो टारगेट है नियरली हम उसको अचीव कर लेंगे। तो अभी सर फोर्थ क्वार्टर में कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनफ्लोज का? हम लोग वही जो हमारा जो टारगेट है 15,000 के अराउंड, उसी को हम लोग अभी टारगेट रखे हुए हैं। और अभी जैसे कल ही हमने 2 रोपवे के प्रोजेक्ट बिड किए हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ से लेकर 2,500 करोड़ रुपीज के ईच प्रोजेक्ट है। और काफी अच्छी हमको एक्सपेक्टेशन है कि उनमें प्रोजेक्ट आने चाहिए हमको। श्योर। एंड अभी रोपवे में भी गवर्नमेंट काफी थ्रस्ट दे रही है, आने वाले टाइम में रोपवे के भी अच्छे प्रोजेक्ट होंगे। ट्रांसमिशन में भी हमने अच्छे अभी पाइपलाइंस में है प्रोजेक्ट्स, और एज हाईवे में तो है ही है। श्योर। एंड ये जस्ट एक और चीज पूछना था, ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन व्हाट वुड बी दिस ईयर नेक्स्ट ईयर? आई थिंक ये साल का तो आपने बताया शायद 200 करोड़ जो टुवर्ड्स द हैम प्रोजेक्ट्स, और नेक्स्ट ईयर का कितना होगा सर? सो फॉर नेक्स्ट 2 years मतलब हमारे को टोटल इक्विटी कंट्रीब्यूशन पेंडिंग एज ऑन डेट इज अराउंड 1,580 करोड़, राइट? इसमें से तो अगले 2 साल में 700 मतलब इट विल बी रेंज ऑफ 600-700। श्योर। एंड जस्ट सर लास्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसमिशन साइड पे कुछ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी अभी दिख रहा है कि हाउ वी आर स्टिल गोइंग सिलेक्टिव, कि कैसे कर रहे हैं? जस्ट इफ यू कुड हाईलाइट दैट। ट्रांसमिशन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। करीब करीब 7 प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में, जिनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ये मान के चले 10,000 करोड़ रुपीज है। और इसके लिए हमने इंटीग्रेट के साथ में भी 5,000 करोड़ रुपीज के लिए बिड करने के लिए पार्टनरशिप की है। राइट, पर अभी कुछ ज्यादा बिड नहीं किया होगा अभी तक। हाँ, अभी पाइपलाइन में है, अभी इस क्वार्टर में अभी बिड होनी है मतलब। श्योर श्योर। ठीक है सर, और क्वेश्चन होंगे तो मैं आई विल कम बैक इन द क्यू। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you. The next question is from the line of Shravan Shah from Dolat Capital. Please go ahead. Thank you, sir. Sir, just continuing the previous question and for the better understanding of everybody, can you repeat the value and number of projects which we have already bid segment wise, and the projects value and the projects where we are planning to bid till March? इसमें हमने जो बिड कर रखे हैं हाईवे में करीब 42,000 रुपीज के 48 प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रखा है। और इसी तरह से रेलवे में हमने करीब 5,000 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट बिड कर रखे हैं, और रोपवे में 2,500 करोड़ रुपीज के बिड कर रखे हैं। सर, रोपवे में आपने बोला, सॉरी सर, रोपवे में आपने पहले मेंशन किया था 2 प्रोजेक्ट है 2,500 करोड़ ईच, या दोनों मिला के 2,500 करोड़? नहीं, दोनों मिला के हैं। ओके, दोनों मिला के। ओके, 2,500 करोड़ रुपीज के दोनों मिला कर हैं। ओके, गॉट इट। एंड और कितने बिड करने वाले हैं सर? अभी हैम के अंदर अगर हाईवे में देखें तो करीब 1,10,000 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में गवर्नमेंट ने जिनके बिड मतलब आ चुके हैं जिनके, और अप्रोक्सीमेट जो टनल्स के हैं 25,000 करोड़ रुपीज के हैं। रेलवे के करीब 8,700 करोड़ रुपीज है। ट्रांसमिशन के करीब 10,000 करोड़ रुपीज के जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। ओके, एंड ये जो द एंटायर अमाउंट व्हाट वी सेड हैम 1.1 लाख करोड़, ये एंड द टनल 25,000 नहीं, तो वी विल बी बिडिंग द एंटायर और वी विल डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टिवली वी विल बी बिडिंग? सो जस्ट रफली वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ मच वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स आर वी प्लानिंग टू बिड? सो अल्टीमेटली जो मेरे को समझना है वो सर, जो 15,000 करोड़ है वो कैसे आ सकता है सक्सेस रेट के हिसाब से? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड।
हाँ नहीं, वो तो देखो सिलेक्टिव ही होगा, सभी को तो बिड किया भी नहीं जा सकता इनके ऊपर। पर हम लोग इवेल्युएट हर प्रोजेक्ट को करते हैं और उसकी पूरी इवेल्युएशन होने के बाद में फाइनल होता है कि इसको बिड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। प्राइसेस को भी देखना पड़ता है, लोकेशन को भी देखना होता है, जो भी रिस्क फैक्टर है उनके सब को एनालाइज करते हुए डिसीजन होता है। पर एनालाइज हम सभी को करेंगे, मतलब ये जो हमारे पाइपलाइन में है इनको एनालिसिस होके और इसका फाइनल डिसीजन होगा। ओके। और सर जो 15,000 करोड़ हम बोल रहे हैं कि हम लोग अभी विन करेंगे, ये 15,000 करोड़ ईपीसी वैल्यू बोल रहे हैं हम लोग कि हैम का वैल्यू बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा फिर ईपीसी वैल्यू 70% हो जाता है उसका, तो वो एक जस्ट समझना, बिकॉज स्टैंड अलोन के लिए तो अपने को ईपीसी ऑर्डर बुक चाहिए। हाँ, ईपीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ईपीसी की बात कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। दूसरा चीज सर, इन टर्म्स ऑफ द गाइडेंस, अगर वापस से एक बार अगर एक्सप्लेन करेंगे कि ये साल नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग बोल रहे थे कि 15-20% नेक्स्ट ईयर से हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन फ्रंट एंड कोर EBITDA मार्जिन 15% प्लस का। सो वो एक बार अगर फॉर दिस ईयर हाउ मच एंड नेक्स्ट ईयर का कैसा है, मार्जिन पे कैसा है अपना? अभी तक Sean bhai, the issue is so far we haven't received any order, right? So in terms of the next year guideline, in terms of top line, I don't think probably we'll be able to achieve unless until whatever projects we are bidding, right? If we can start on early basis, right? So most of the projects are under HAM and EPC. We don't think any near-term opportunity where we'll be able to win more EPC projects. And so I believe that probably for next year to achieve 15% growth in terms of top line would be difficult. Maybe in the range of again 8 to 10%, depending on what kind of order we are getting in next 1 or 2 months, right? And when those projects will be started on ground. And margin का तो ऐसा है कि because see competition is there, so probably I'll be giving more guidance in next whenever I'll be having the projects on in my fold, then only I'll be able to give you guidance on margins, right? What margin I'll be getting. ओके, तो बट करंट जो ऑर्डर बुक है 14,000 करोड़, वहाँ पे तो 15% प्लस का वी आर श्योर गेट, वी विल बी एबल टू गेट। ओके, एंड बाकी में सर आपको हैम में भी इतना ज्यादा कंपटीशन लग रहा है एंड दैट्स व्हाट वी आर थोड़ा सा हेजिटेंट है कि गाइडेंस देने के लिए, मतलब रिस्क दिख रहा है कि ये नंबर 14% भी जा सकता है, 13.5% भी जा सकता है, कि वो रिस्क अपने को दिख रहा है अभी थोड़ा सा। See, उसमें मतलब that's I would say it's a strategic call which we have to take कि किस तरीके से अपने को, let's say if we want to restrict our growth, तो अपने 15,000 करोड़ नहीं लेंगे ना, अपने 10,000 करोड़ भी काम खत्म कर लेंगे, right? So it depends. I mean, if I am not getting the reasonable margin, probably will not go that much aggressive in taking more orders, right? So I have to have some sort of reasonable margin whatever projects I'll be executing. So उसमें अपने को मतलब it's a strategic call. I mean, depending on the situation, whatever situation which is emerging, right? उस पे ये call लेंगे अपन। Okay, but broadly 13.5%, 14% के नीचे तो हम we will not go for the project bidding. मतलब 13% is, I think it's a bare minimum which I should not go below that. Okay, got it. Understood. Last, sir, in terms of the capex, you said for 9 months we have done 216 crore. What is left for the fourth quarter and the next year number? And also post this, I need a couple of balance sheet data to from you. Sure. But then capex so far we have done 200 something odd crore, right? And for in the quarter, I mean that is fourth quarter, we don't expect capex more than 20-25 crore for the current quarter as well. And for next year, depending on the project, I mean which we'll be getting. Otherwise, that our capex would be in this range only. It would be less than 200 crores unless until I am getting good amount of orders. Okay, and then sir the balance sheet, sir आपने एक बार if you can repeat the standalone debtors and उसमें से HAM का debtors कितना है and the consolidated number. So standalone debtors I have mentioned around 1,043 crore and उसमें हमारा HAM का debtor would be around 680 crore is the HAM debtors, right? 680 crore. Okay.
level पे it is only 414 crore, right? Sorry, sir. Sorry. What did you say? Console level पे my debtor is around 414 crore. 414 crores. Okay, okay. And console unbilled revenue, you said 425 crores. 425 crore, right? Okay, okay. Got it. Thank you and all the best, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Mohit Kumar from DAM Capital. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। इसमें पहला क्वेश्चन ये है सर कि आपने इंडिगेट के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया था, इसका नेचर क्या है सर? एंड और क्या हम सारे जो नए ट्रांसमिशन एसेट हैं इसकी बिडिंग इंडिगेट के साथ ही करेंगे क्या? So IndiGrid के साथ में we have done some sort of strategic partnership where we have identified certain projects जहाँ पे will be having support both in terms of equity as well as monitoring as well as our guidance, because IndiGrid is there into this business for last so many years. So where will be continue to receive the guidance from or even capital also. तो वो कुछ किया है, but it is not that कि सारे project हम IndiGrid के साथ में करेंगे. We have identified certain projects where we'll be bidding jointly. ओके सर। दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन ये है कि तो क्या हमने कैप कर दिया है क्या उसका, जो आई हर्ड दैट कि 5,000 करोड़ तक का इसके थ्रू बिड करेंगे, रेस्ट विल बी फ्री, राइट? ऐसा कैप नहीं किया है. पॉइंट इज मतलब व्हाट वी बिलीव इज दैट एज ऑफ नाउ व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी सो फार वी हैव आइडेंटिफाइड, राइट? उसमें हमारे को लगता है इतना है, बट दैट कंटिन्यूज. तो ऐसा कोई इशू नहीं है. Understood, sir. Secondly, on the ropeway, how does the ropeway project differ from the normal road project in terms of civil work, and how much the equipment? And can we expect similar kind of EBITDA margin which we earn in the road side? देखो EBITDA margin 15% तो मान के चलते हैं सर हम लोग. But see that is yet to be executed. तो आउटकम तो अभी समझ में आएगा जब करेंगे. But yes, सिविल साइड में काम कम होता है. इट्स मोर लाइक काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, राइट? तो टावर इरेक्शन एंड देन काफी सारा सप्लाई है ऑफ ओएम पार्ट, राइट? सो इक्विपमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगता है. आई डोंट थिंक मच इक्विपमेंट्स और प्लांट मशीनरी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ रोपवेज. बट मार्जिन का आर एक्सपेक्टेशन इज लाइक दिस, बट वो तो फिर थोड़ा एग्जीक्यूट करेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू मतलब जनरली सी आर एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑलवेज व्हाट एवर प्रोजेक्ट वी आर एंटरिंग इनटू. काम तो वैसे ही करते हैं, बट रीजन थोड़ा उसमें आएगा. एक आध प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू हैविंग मोर terms of clarity in terms of what margin will be getting. So lastly, on the margin side, are you seeing the input inflation pressure reducing? सीमेंट का प्राइस कम हो रहा है, स्टील का प्राइस कम हो रहा है, तो उसके कारण मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए Q4 में और FY24 में. प्राइस कम तो नहीं हो रहा है सर, बढ़ रहा है. अब कहाँ प्राइस कम होने से हो गया था, तो वापस दो प्राइसेस आर बाउंसिंग बैक. तो आई डोंट थिंक इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होएगा गोइंग फॉरवर्ड. अभी आज भी नंबर देखो, सीपीआई नंबर इज आल्सो इंक्रीज, राइट? तो थोड़ा इन्फ्लेशन मतलब इन लास्ट 2 quarters एक्चुअली वी वर ऑफ ओपिनियन दैट ये इन्फ्लेशन थोड़ा कूल डाउन हो रहा है. अब मतलब आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन्फ्लेशन विल बी और व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन सिनेरियो विल बी इनटू देयर नेक्स्ट 1 year. Government target is 5%, 5.25% like this. But अभी ऐसा स्टील में है, because see, and I don't think if steel के prices come for cement बोलो चाहे steel बोलो, because उनके नंबर भी ठीक नहीं आ रहे, right? तो I don't think वहाँ पे कोई in terms of prices will cool down. Understood, sir. Thank you and all the best, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Question from the line of Ashish Shah from Centrum Broking Limited. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Thank you for the opportunity. Sir, first question is on the status of the InvIT. उसमें थोड़ा elaborate करेंगे अभी at exactly what stage we are and by when do we expect to launch the InvIT? So जैसे अजय सर ने बताया था, we already filed the DOD and we received the first set of comments also from SEBI. अब we are actually, I mean, since recently we have received the first set of comments from SEBI.
So what we very soon we'll be starting our marketing, right? And I think March would be so early. I don't probably March end or by April end we'll be done with this InvIT launch and all that. Okay. ठीक है सर. सेकेंडली ऑन टर्म्स ऑफ अपॉइंटेड डेट, एक अपॉइंटेड डेट बची हुई है हमारी फॉर द प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र. सो बाय व्हेन डू वी एक्सपेक्ट दैट आल्सो टू कम? So उसमें I think some land issues are going on, probably another forest issue. Forest issue may be there, right. So some issues are there at the NHI end. Probably in next 2 to 3 months, I believe we'll be having that appointed date also. Okay, right sir. Okay sir, thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Jitendra Rishi from Analysts Capital. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Thank you for taking my question. Sir, on the bid pipeline, which you said that 42,000 crores from roads, 5,000 for railways, 25,000 rupees. So when are these bids expected to open, sir? हेलो. बिड तो ओपन कंटिन्यूटी में मतलब एक गवर्नमेंट जो अपने एनएचए का एक रेगुलर प्रोसेस है. इसमें क्या नंबर ऑफ बिडर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. कई बार क्या नंबर ऑफ बिडर्स ज्यादा होते हैं तो उनको टाइम ज्यादा लगता है, और नंबर ऑफ बिडर्स कम हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनका इवैल्यूएशन हर एक का टेक्निकल और फाइनेंशियली सारा इवैल्यूएशन होने के बाद ही बिड ओपन होता है. और इन जनरली विदिन मतलब 1 मंथ के अंदर हो जाता है. प्रोजेक्ट थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं. ऑलमोस्ट 50,000 crore of projects where we are awaiting the tenders are still awaited to open. That is what we can consider. It's a 14,000 crore where bids are yet to open. Right. अच्छा, तो this you said about आपने जो बताया है वो बाद में जो question. Yeah, please come again. Yes sir, you said that 42,000 crore, 5,000 crore, 2,500 crores in the Q&A where you said the bids. So this bids you are saying, you mean to say you are also pipeline this year? Acha. No, so what you are saying is right. Okay, I mean when these bids would be when those projects would be bidded, it will take another 1 month of time. It is not necessary that every project is taking 1 month of time, right? तो 7 दिन में भी open हो जाते हैं. And it may take as more as different sir. ठीक है sir, I got your point. ठीक है. Yeah. Sir, on the balance sheet side, can you give us details of the retention money and payables, sir? Retention money, I don't think retention money is, because so most of the projects are under HAM mode, so there is no retention, right? And because of that, and I need to check. I think that COVID, that Atmanirbhar Bharat na, वहाँ पे retention is already, तो होगा. I won't say that there will not be any retention, but yes, of course, in some railway projects there would be retention money, right? And कुछ होगा. So I'll give you separately that answer, right? और creditors, outstanding creditors कितना रहेगा sir? My creditors are around 36, almost 900 crore. Sir, based on the current run rate of execution, so we can safely assume that we can grow at 5%. We can end up growing at 5% this year with a 15% EBITDA margin. Yes. It should be. I mean, anywhere between 5 to 10% this year. Okay. Yes. Sir, any bonus and claims which we expect? The current quarter there is no bonus and claims. Q4 and next year, anything which is lined up which you expect to receive? नहीं वो तो रहता ही है ना. I will always endeavor to have more and more bonuses, but वो मतलब to anticipate that bonus हो तो सकता है. Bonus we can expect, but उसमें तो अब आपको क्या पता है 50 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, 200 होगा, मतलब क्या मालूम है. No, I just लाइफ और मतलब कि 1 महीने तो रेवेन्यू हमारा बोनस में आ जाना चाहिए. आने मतलब कुछ अभी ये क्वार्टर कुछ आया नहीं था. थॉट के कुछ नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ ओवर स्पिल ओवर है ऐसा कुछ रहेगा. तो इसलिए दैट इज बिकॉज़ लास्ट ईयर आल्सो वी गॉट सम हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है, बट मतलब उसको एंटिसिपेट करना इज वेरी डिफिकल्ट. Got it, sir. Sir, coming back to the order inflow, I know we are harping on retention question. Now number is with me. It's around 50 crore. 50 crore. And sir, based on the including the data, sir, right?
It is included in debtors. So the debtors number which you gave was including retention. Right. Okay. So based on the new projects, new diversification into railways, metros, and roadways. So obviously, our experience in metro has been nil so far because we were having the orders, but we couldn't execute for whatever reason. But sir, now we have started working on the transmission projects. That project EPC work has started. So how has been your experience in terms of execution, and what has been the margin experience in these projects? So just to understand, that you are looking to bid for 10,000 crore transmission projects, if at all we are able to win at least a couple of projects, what would be your experience in that, sir, in terms of execution and margin? So it's not that we haven't executed any one metro projects which we are executing as of now also in order book also, that is in Bangalore. That is under execution, and we are bidding. I mean, it's our continuous endeavor to bid more and more metro also, right? But so far this transmission is concerned, yes, of course, so far we haven't, experienced that kind of margin which we were, getting into road projects, right? But it was our first project. It would be, I would say, in the range of, it's a double digit, but it may not be, as high as that. I'd say it's just starting double digit. You can say it's a 10% or 11%, that kind of margin we are expecting. We probably will be, achieving into this transmission. But this was our first transmission project, and we are gaining confidence right now, right? And we are, making aware, and we are awareing ourselves basically for, whatever nitty-gritties of there into this transmission project and transmission industry. So probably going forward, we'll be, able to have more margin, and this is our past experience. We'll be having more margin into. But yes, of course, that kind of margin is not there. 15-17% margins are not. It's very difficult. It's a last question on the ropeway project. So what would be the civil portion and what would be the commodity portion in the ropeway? And one more to add, what is your experience in Bangalore Metro and what is the margin you are recurring margins in that project? So Bangalore is on very initial phase so far, right? But we believe that we'll be able to have that kind of margin in metro as well. I mean, 15% margin is achievable, right? And ropeway material part, supply part is almost 60 to 70% the supply part. Got it. That's it, sir. Right. That's it from my side, and all the best, sir. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Hiten Borja from Joindre Capital. Please go ahead. Hello. Yes, please proceed with your question. Yeah. हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर धन्यवाद सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस जो 15% से 8 से 10% कर दिया है, तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रोथ गाइडेंस कम करने का मेन कारण क्या हो सकता है कि एग्जीक्यूशन फेज पे कम है, बिकॉज एज यू मेंशन इन योर ओपनिंग रिमार्क्स ऑर्डर बुक पाइपलाइन इज वेरी स्ट्रांग। तो हमारा ये जो गाइडेंस कम हुआ है किस कारण की वजह से हुआ है? क्या एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कम है और इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन? एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन फॉर दैट सर? नहीं, एग्जीक्यूशन एकदम स्ट्रीमलाइन में है। एक्चुअल में अभी जो नए प्रोजेक्ट जो आएंगे उसमें थोड़ा समय लगता ही है प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में, उसकी वजह से ये है। अदरवाइज जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर। ये जो समय की बात कर रहे हैं दैट इज ये अपॉइंटमेंट डेट सर? अपॉइंटमेंट डेट्स में डिले हो रहा है क्या? नॉट अपॉइंटमेंट डेट, इट इज बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारे को दिसंबर में भी कुछ काम मिल जाता, अक्टूबर में भी, थर्ड क्वार्टर में भी हमारे को काम मिल जाता, बट सो फार वी हैवंट रिसीव एनी ऑर्डर, राइट। और हैम प्रोजेक्ट ऐसा होता है, इट इज अनलाइक ईपीसी प्रोजेक्ट, तो वंस यू रिसीव द ऑर्डर प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 3 to 4 months वी कैन स्टार्ट वर्क ऑन द ग्राउंड। बट हैम प्रोजेक्ट में 8-10 महीना लग जाता है टू हैव एनी एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड। तो अब अगर हमारे को प्रोजेक्ट मिलता है इन द मंथ ऑफ February और March, प्रॉब्ली दोज प्रोजेक्ट वुड बी स्टार्टेड अगेन इन द मंथ ऑफ नेक्स्ट February and March ओनली, सो लास्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आज जो मैं ऑर्डर लूंगा, whatever execution is, I am guiding you in terms of top line, whatever pending order book is with me,
राइट? वो पे ही मैं गाइडेंस दे सकता हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी न्यू ऑर्डर्स विद मी. तो अकॉर्डिंगली हाँ जी सर, बोलिए सॉरी. तो इसलिए ऑर्डर माय फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जीक्यूशन और नेक्स्ट ईयर टारगेट इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ये जो हम ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे अक्टूबर दिसंबर में, जहाँ से वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, तो ये कौन से सेक्टर के वजह से नहीं आया? लाइक ये हाईवे, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सर ये मैं एक आध दो कंपनी का और कॉल सुन रहा था, तो उन्होंने भी इसका गाइडेंस कम किया है. तो मुझे इंडस्ट्रियल पिक्चर समझना था कि ये क्यों हो रहा है एग्जैक्टली. मेजर वी आर इनटू हाईवे. हाईवे में सी दैट कि अभी बहुत ज्यादा हाईवे में बिड हुए नहीं है. जो लास्ट क्वार्टर में मतलब जनरली बिडिंग स्टार्टेड मतलब बिडिंग पिक्स अप इन द लास्ट क्वार्टर. जनवरी से हो जाता है, इवन दिसंबर से हो जाता है. बट इस बार थोड़ा हुआ नहीं है फॉर डिफरेंट रीजन, आई डोंट नो, विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ. तो एंड आज की डेट में भी पाइपलाइन ऑफ दैट ऑर्डर, जो हाईवे ऑर्डर इज मोर देन 1 लाख करोड़ विच इज ऑलरेडी देयर इन द पाइपलाइन. तो अब वो NHI टारगेट है. आई डोंट बिलीव दैट अप टू अभी आज तक 40-45% का बिडिंग किया होगा, और नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टारगेट सो फार विच हैव बीन बिडेड बाय द NHI वेयर बिड हैव बीन कॉल्ड. तो अभी 50% उनको अभी भी करना बाकी होगा. दैट्स माई इन माई ओपिनियन. सो अब वो फरवरी मार्च में ही करना है, अभी तक हुआ नहीं है. तो yes, मतलब that is the reason probably. Oh, sir, just a follow-up. Ma'am, just a. Hiten, I would request you to please come back in the queue. We have many participants waiting in the queue, please. We'll move to the next question, which is from the line of Parvez Qazi from Nuvama Group. Please go ahead. Hi, good afternoon, and thanks for taking my question. So two questions from my side. One, what is our overall exposure to BOT HAM projects till date? Exposure you mean to say total equity plus loans and advance, सब कुछ मिला के what have we infused? So 1,800 crore is the total equity investment so far. Okay, great. And so in Q3 or 9 months, have we received any early completion bonus? Yeah, we haven't received. No, we haven't received any. I mean, 9 months we must have received some, which we already given that number in the previous results. But for the Q3 we haven't received any bonus. Okay, great. That's it from my side, and all the best for future. Thank you. Thank you. The next question is from the line of CA Akash Dhanuka, individual investor. Please go ahead. Good afternoon, sir, and congratulations on the decent set of numbers. सर, आपने पहला 9 महीना में अराउंड 7,000 करोड़ का सेल किया है, एंड FY24 का ग्रोथ अपने 8 से 10% बोल रहे हैं. तो सर FY23 अपने क्या क्लोज करेंगे? FY23 में हमारा ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ इन द रेंज ऑफ 5 to 10% फॉर FY23. मतलब FY22 के ऊपर ना? तो 5 to 10% सर बड़ा मार्जिन हो गया सर. जैसे 7,000 करोड़ अपने आ चुके हैं, अपना 1.5 महीना ऑलरेडी निकल चुका है पहला, आई मीन लास्ट क्वार्टर का. तो अपने को तो अब मोटा मोटी एक अंदाज होगा ही कि क्या क्लोज करेंगे अपने एग्जैक्ट फिगर. एग्जैक्ट नंबर तो सर एग्जैक्ट होने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना सर. ये मतलब एक अप्रोक्सीमेटली सर इट इज 40%, आई वुड से 40 or 45% ऑफ टोटल रेवेन्यू इज जनरली बुक्ड इन द लास्ट क्वार्टर. Because the last quarter total unhindered quarter है, so it's very difficult आज की डेट में बोलना, but that's the range. I mean, थर्ड क्वार्टर से बेटर आएगा क्या? थर्ड क्वार्टर से बेटर ही होता है सर, जनरली बेटर होता है. तो थर्ड क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर इन द इंडस्ट्री. अच्छा. और सर अपने पहला 9 महीना में अपना पैट मार्जिन, एबिटा नहीं पैट मार्जिन अपना 15% प्लस है. तो क्या सर FY24 का भी यही मान के चलूं? आप ये कंसोल की बात कर रहे होंगे, राइट? कंसोलिडेटेड, यस सर. हाँ, सी कंसोल में क्या होता है कि कंसोल में सम फाइनेंस इनकम इज बुक्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट. तो हमारा जो कंसोल है, आप कंसोल देखो या इंडिविजुअल देखो, मतलब I would advise you to see through individual stand-alone basis result, because जो interest rate में movement है, because we are getting interest from
NHI on our HAM projects, right? अब इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो उसका इम्पैक्ट आ गया अभी. दैट मे नॉट बी द केस फॉर गोइंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट क्वार्टर्स में. तो बेटर वुड बी माय स्टैंड अलोन रेवेन्यू और स्टैंड अलोन पेट वुड बी गिविंग यू बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. तो सर जो स्टैंड अलोन में जो पैट आ रहा है वही FY24 में अपने वही मान के चले. बिल्कुल चलना ही चाहिए सर, उतना नंबर तो आना चाहिए. सर अगर आप कंसोलिडेटेड का एक चीज मेरे को मतलब थोड़ा सा समझा पाए कि अपना जो सेल बढ़ रहा है कंसोलिडेटेड में स्टैंड अलोन से मोटा मोटी 900,000 करोड़, पर अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा, तो सर वो क्या एग्जैक्टली किस चीज से हुआ? मतलब वो एक्चुअली पूरा प्रॉफिट में ऐड हो जा रहा है. ये क्या है, फाइनेंस इनकम हो रही है. फाइनेंस इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट. अभी पीछे एक साल में जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट हुआ है, इंटरेस्ट रेट आर राइजिंग, राइट. तो मेरा इनकम जो मेरे को गाइडेंस है फ्रॉम NHI व्हाट आई विल बी गेटिंग, राइट, बिकॉज मेरे को जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है हैम प्रोजेक्ट्स में, वेयर आई विल बी गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम NHI, दैट इज गेटिंग इंक्रीज. तो उसका रिफ्लेक्शन है ये. तो सर मतलब एग्जैक्ट ओवर द पीरियड टाइम बढ़ेगा वो. एग्जैक्टली. Sorry to interrupt you. I would request you to please join the queue back. The next question is from the line of Tina Virmani from Kotak Securities. Please go ahead. Hi sir, thanks for taking my question. Sir, out of this total order book of around 14,000 crore, I missed out on the point of one project where your appointed date is pending. So what is the size of this particular project where appointed date is pending? This is around 700 crore rupees. Around 700 crore. So almost then 13,300 crore order book is now ready to be executed. Right. So there are no concerns on that in terms of execution. Right. Okay. And on the transmission side, you mentioned that there is a pipeline of around 10,000 crore of projects where you would be bidding, and another 5,000 crore where you would be bidding along with IndiGrid. So these are including both, you would be bidding or targeting projects worth 15,000 crore on the transmission side. No. Total 10,000 crore. Total 10,000 crore रुपए. Okay. इसमें 5,000 crore पे इसमें include है. Okay. And these would be all your green energy related projects. And what would be your scope? I mean, what kind of projects will be these for your scope of work? This is BOT project, TBCB projects. हाँ, ये ट्रांसमिशन इसमें ग्रीन एनर्जी का मतलब इससे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बोल सकते हो, बट दैट इज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट व्हिच इज TBCB based, right? It's a BOT project. So and you will be doing the EPC. You will be doing the EPC part of this. We'll be putting our equity. We'll be doing EPC also. Okay. Got it. And the time frame for this targeted opportunity pipeline is how much? Is this is also till March, or this is for next year also? By when do you see this materializing, this bidding pipeline to finally get awarded to different players? You're talking about transmission? Transmission. So transmission is, moving at slower pace. So it may take, it may go up to June. Okay. And your work would commence post the financial closure and all. Effectively, it would start getting reflected maybe from Q4 onwards Right. of Q4 FY24 onwards. Right. Got it, sir. Got it. That's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Vidya Sanwal from Nivesha Investment Advisory. Please go ahead. Hello. Yes, please proceed. Thank you for the opportunity. I just wanted to know, Sorry to interrupt you. I just wanted to know, are you focusing? Vidya, your voice is not clearly audible. Can you please use a handset mode? Just a second. Hello. Yes. Yeah.
Yeah, sir, I was just saying that subcontracting expense is decreasing since like 3-4 years. So I wanted to know, are you focusing more in-house or what? I'm seeing consolidation figure. No. No. I mean, it's a case-to-case basis decision on the project to project. I mean, somewhere we can, have more subcontracting and somewhere we can do in-house, right? Okay. So, yeah, it's varying. Okay. And sir, I wanted to know what is mining royalty are you paying? Mining royalty, again, it's very depending on which state we are working. Okay. Somewhere it is no royalty, somewhere it is huge amount of. Depend on state and material, what material you use. अर्थ में अलग रॉयल्टी है, एग्रीगेट पे अलग है, मतलब जो मेटेरियल और फिर स्टेट के अलग अलग स्टेट में अलग अलग रॉयल्टी सेट रहता है. Okay, thank you. Thank you. The next question is from the line of Deepika from Phillip Capital. Please go ahead. Hi, good evening, sir. Good afternoon, sir. I wanted to ask about the status of CBI inquiry that was going on. So CBI has filed their report, and that matter is with court in Guwahati. So we are pursuing, and we have appointed, and we are taking the help of legal advisor also, and we are representing our case before the court. Okay. What is the timeline do we expect to the outcome to come? That's depend on court ना मैडम. अभी कोर्ट में तो डेट पे डेट आती है. That is कोर्ट का लंबा थोड़ा प्रोसीजर रहता ही है. बाकी मतलब for us to commit any timeline will be, Okay. So second question, this last one. How much equity have you invested in 9 months and the previous 3 quarters? So total, I think it was 1,300 something odd crore as of March 2022, and right now it is 1,800 crore, right? And for last quarter it was around 225 crore odd we have invested. Okay, sir. That's it from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Gurvinder Singh from Fortuna Investment Advisors. Please go ahead. Thank you, sir, for the opportunity. मैं सर आपसे ये थोड़ा समझना चाह रहा था that once the InvIT comes in, उसका impact on the GR Infra balance sheet क्या होगा? Specifically, आपके हिसाब से कितना equity release हो सकता है और कितना debt उस InvIT में चला जाएगा? So any guidance on that aspect? So, अभी जो projects so far we have identified to switch over to InvIT is around 7 projects where total debt is around 3,800 crore as on date, right? So depending on the timing of the InvIT, probably I believe that to that extent my debt would go outside my GR balance sheet, right? Because if I don't, that again depend on, I have to take. As whenever this InvIT would happen, and then the auditors, what our auditors would suggest, I don't know, but that's the case. I'll give you just numbers that this is the debt number, and regarding your question about the release of equity, yes, there is no cash transaction which as of now we are proposing. We are not getting any cash. It's a unit which we will be getting at GR, right? Because idea was not to receive. Is not to monetize exactly immediately, but over the period as and when we, as we progresses, right, we'll be able to put more projects into that InvIT, and then we'll be able to monetize depending on, because it's a listed InvIT which we are planning, and we can monetize after listing. We can monetize as and when the funds are needed at GR level. So yes, but at this time we are not proposing any kind of cash inflow to GR. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Nikhil Abhyankar from DAM Capital. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for the opportunity. So, just one question. Rest of the questions are answered. We were barred from bidding for NHAI for 1 month in November.
and we did not get any reason for that in the previous call. So what was the reason, and what are the things that we have done so that it won't happen again? I think that was because of that CBI issue, right? Okay. They have, taken a call. I mean, they have issued this kind of debarment order, suo motu basis, right? Though we have been given this opportunity to represent our case, but they have ignored our case and they have debarred it for 1 month. And to avoid those circumstances going forward, I mean, we have to be more vigilant, we have to be more alert in terms of what, because it was the case paid by CBI that some sort of bribing is, is happening, right? So we have to be more vigilant, right? We have to be more careful going forward. Understood. That's all from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Navit Virani from Bastion Research. Please go ahead. Hello. Hi. Thank you for the opportunity. Sir, I have two questions. First, wanted some better clarity on, sir, कितनी इक्विटी हम अब तक HAM projects में invest कर चुके हैं, कितना करना बाकी है, and what is the target? If you can give these three figures, it will be really helpful. See, total जो investment है, equity commitment from our side is, as of December, is 1,580 crore, which is, to be infused in next 2.5 years. और total हमारे को करीब 3,200 crore का करना था. So that's the case. Rest हो गया, मतलब the difference is done. Difference is done. Okay. And sir, lastly, continuing with what the previous participant asked on the disbarment order which we received. So, what is the current status? I mean, are we allowed to bid? I mean, how is it currently? Debarment order. So that period was over in the month of or the first week of December, right? Okay, so that was for 1 month only, and after that it was. Yeah, we are bidding continuous basis. Okay, sir. That's it. Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Fitain Buricha from Joindre Capital. Please go ahead. Hello. Yes, please. Yes. Yeah. So my most of the questions have been answered. Only one question. I want a clarification on the margin. कि next year हमने जो guidance दिया है उसमें margin intact 15% है या फिर margin में भी थोड़ा pressure रहेगा? See, margin में, because depending on, the order I'll be getting and the margin which I can expect in the new orders, right? तो थोड़ा हो सकता है change हो, but otherwise existing order book is having, I mean, I am pretty sure that we'll be having that kind of margin, 14-15%. 14-15%. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of C. Akash Tanuka from an individual investor. Please go ahead. Yeah, sir, thank you for the opportunity all over again. Sir, वही पहले वाला point मैं पूछना चाह रहा था कि सर अपना standalone और consolidated में पूरा 9 महीना में there's a difference of 867 crores जो आप बोल रहे थे NHAI का कोई finance cost के कारण आता है जो आगे नहीं आएगा. सर मेरा point वही था कि अगर सर ये 14% का difference हो जाता है, सर ये आगे आएगा कि नहीं आएगा? Because 14% तो सर FY24 का calculation करना थोड़ा difficult हो जाता है, इसलिए बस थोड़ा clarification चाह रहा था. नहीं. So, Mr. Dhanuka, the problem is that it would be, the impact would be only in case of interest rate movement. अभी क्या है, in last 9 months you see that there is a huge movement in interest rate, right? Bank rate जो बोलते हैं, repo rate जो बोलते हैं RBI का. हाँ. और ये सिनेरियो जब वापस आएगा, मे बी लेट्स से आफ्टर 4 year, 5 year, 10 year डाउन द लाइन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, राइट? अगर ये मूवमेंट वापस कभी आता है, देन देयर वुड बी इम्पैक्ट, अदरवाइज इट वुड बी नॉर्मल. सो आज ये जो इम्पैक्ट है, दिस इज एबनॉर्मल इम्पैक्ट इन द करंट ईयर. तो सर नॉर्मल इम्पैक्ट कितना होगा, कितना का डिफरेंस स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड में? उसमें मतलब आप ये समझो 14-15% का मैं नहीं बोलूंगा, बट करंट ईयर में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, करंट ईयर में कितना डिफरेंस है, ये करीब आप ये मान के चलो, इट इज आई वुड से 50-60% हायर. सर समझा नहीं, मतलब 9 महीना में अपना 14% का डिफरेंस है.
मार्जिन की बात कर रहे हैं ना अपन? नहीं सर, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का जो सेल्स फिगर है, जो अपना फाइनेंस जो NHAI के थ्रू आ रहा है वो रेट डिफरेंस के कारण जो आपने बोला ना, तो वो 5% 7% का डिफरेंस आएगा। तो आधा हो जाएगा ना इधर से, मतलब वो आधा तो स्टेबल रहेगा ही ना। हाँ, आधा स्टेबल रहेगा। तो मतलब FY24 में जो भी स्टैंड अलोन आएगा उसका 5 से 7% और देसी कंसोलिडेटेड सेल्स आएगा। राइट। और मतलब सर जो पैट मार्जिन कंसोलिडेटेड का अगर आप एक बार गाइड कर पाए तो बढ़िया होगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस आ रहा है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में। आपने पैट तो स्टैंड अलोन का बता दिया कि जो अभी आ रहा है वही आगे आएगा, बट अगर आप कंसोलिडेटेड का भी बता दें पैट तो। कंसोल का पैट इज बिकॉज आप समझो, कंसोल में पैट क्या होता है कि अगर तो मतलब कंसोल का पैट एडिशनली आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। जो मेजर स्टैंड अलोन का है पैट, अगर 14% है तो उसमें 1% ऐड कर दो, 2% ऐड कर दो, दैट वुड बी द कंसोल पैट। अच्छा ठीक है सर। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस हेल्प। जो अपने इन्फ्लेशन, आपने अभी कुछ प्रीवियस कॉलर को बोला था कि स्टील और सीमेंट की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं वो आगे ऐसे ही रहेगी, क्योंकि घटने का कुछ लग नहीं रहा। तो सर अपना कॉस्ट प्लस नहीं है कि भाई मतलब अपने को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कॉस्ट प्लस है, बट ऐसा नहीं कह सकते, इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक। सो द क्वेश्चन वाज कि इन्फ्लेशन अभी कम हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, दैट वाज माय आंसर। बट अपने प्रोजेक्ट जो है वो सारे कॉस्ट प्लस है, मतलब दिस एस्केलेशन इज पास थ्रू, राइट? बट इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस, एकदम कमोडिटी की प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक, इट इज लिंक ऑन WPI CPI और राइट। तो वो उसमें समटाइम्स इट मे बी आई विल बी हैविंग द बेनिफिट और कभी कभी मेरे को नुकसान भी होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दैट इज गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। अच्छा तो सर ये जो 5 to 10% आपने ग्रोथ बोला था सर नेक्स्ट ईयर के लिए, वो कंसोल पे बोला था कि स्टैंड अलोन पे? स्टैंड अलोन पे ना। अच्छा सर, एक और चीज, बस अपने सर इतना कमा रहे हैं EPS में, जैसे लास्ट ईयर अपने 78 रुपया था, उसके पहले भी 78.5 था अपने, और डिविडेंड नहीं दे रहे हैं कुछ भी, तो क्या प्लान अपना उसके लिए? सर देखो, डिविडेंड का ऐसा है कि एक तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग एज ऑन डेट ऑल्सो अराउंड 80% इज विद प्रमोटर्स। करेक्ट। दूसरा क्या है कि द अपॉर्चुनिटीज विच वी बिलीव इज मतलब जो इंफ्रा में जो सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, तो आई बिलीव दैट विल बी हैविंग मोर opportunities where we can deploy this fund rather than giving